सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। और आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है इस वजह से क्योंकि मेरे पास है सैमसंग का फोल्ड 2। देखिए सैमसंग फोल्ड 1 जो फोन है ना, इसका काफी टाइम से मैं आई बीन क्वाइट अ फैन बिकॉज फोल्डिंग टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। लेकिन जैसे ही मेरे पास फोल्ड 2 आया ना, फोल्ड 1 के बारे में तकरीबन सब कुछ भूल गया बिकॉज जो फोल्ड 1 में प्रॉब्लम थी, आई मीन इट वाज अ इंटरेस्टिंग फोन लेकिन उसमें कुछ थी प्रॉब्लम्स, सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं विद द फोल्ड 2। तो बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस, बात करेंगे अबाउट अ डीप डाइव एंड अ रिव्यू ऑफ द सैमसंग फोल्ड 2। फिर चलेंगे टुवर्ड्स आवर क्वालकॉम सेगमेंट और आज बात करेंगे अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव एक्चुअली बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग नेशंस इन द वर्ल्ड और ऑलमोस्ट सारी गेम जो है हमारी फोन्स पे हो रही हैं एंड दैट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। आप सोचिए 10 साल पहले 12 साल पहले कौन सी गेम्स होती थी? We used to play games like Snake and others on our phone, on our Nokia phones. और आज गेमिंग के फोन्स पे कहाँ पहुंच गई है? Today we have games that can compare to PC and consoles. That is how much we have taken a leap forward. कैसे हुआ ये? How does the Snapdragon processors inside actually make that all happen? इसके बारे बात करेंगे। और हमारी टॉप स्टोरी है Samsung Galaxy Fold 2 और मैं आपको शुरू में बता दूं इस फोन के बारे में 3 बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। मेरे पास Samsung Galaxy Fold 1 है और काफी टाइम से इसका हम लोग लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करते आए हैं, सो आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर फोन। आपको मैं 3 चेंजेस बताता हूं। सबसे पहला चेंज, एज सून एज यू ओपन दिस फोन एंड यू पावर इट ऑन, इसकी आउटर स्क्रीन, इसमें स्क्रीन बहुत ही छोटी थी, अनयूजेबल थी, लिटरली बेकार थी। दे हैड नॉट पुट दैट स्क्रीन ऑल्सो, अदर देन फाइंडिंग आउट हु इज कॉलिंग यू, इसका और कोई फायदा नहीं था। इसमें अब इन्होंने जो स्क्रीन दी है is actually very usable. पहले कुछ मिनट्स में ही I was able to start using it and it became completely and totally a game changer for me. It's as big as a normal phone जो आजकल प्रीमियम फोन्स आते हैं, in fact quite big. But the other thing is it's a little narrow, तो थोड़ा सा you have to get used to how to use it, but very usable. फिर मैंने फोन को खोला and the other big change is no notch out here. इस फोन में एक बहुत बड़ा नॉच दिया था जो कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देता था। It made it look really bad. आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा नॉच है, इसमें उन्होंने दिया है एक छोटा सा पिन होल पंच होल कैमरा out here and that is the only thing. तो पूरा एक टैबलेट एक्सपीरियंस आपको मिलता है इसमें, which is absolutely fantastic. And now I'll tell you about the big change number 3 और वो है इसका hinge. The hinge is solid. आप इसको कोई भी एंगल पे, if I want to stop it here it stops, if I want to stop it here it stops and it feels absolutely solid. इसको यूज करने के बाद इसका जो hinge है वो बहुत ही flimsy सा हो गया। See, it doesn't hold any position. तो आप इसको यहाँ बंद कर सकते हैं या आप इसको खोल सकते हैं, बट इन दिस नाउ द यूजेज इज कंप्लीटली एंड टोटली चेंज। बहुत सारे और भी चेंजेस हैं सॉफ्टवेयर में, द वे यू यूज एप्स, द कैमरा, द प्रोसेसर, द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस, बहुत चेंजेस हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 इन आवर सेल गुरु रिव्यू। सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 2 फोन को लॉन्च कर दिया है। आज हम जानेंगे कि क्या ये 1.5 लाख रुपए की कीमत को जस्टिफाई कर पाएगा। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 में आपको मिलेगा 6.2 इंच का कवर स्क्रीन। जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तब आपको मिलेगी 7.6 इंच की स्क्रीन। दोनों एमोलेड स्क्रीन है, साथ ही इनमें हाई पिक्सल डेंसिटी भी है। बड़ी कवर स्क्रीन के साथ अब आपको हर बार मेन स्क्रीन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। इनर स्क्रीन में एडेप्टिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो इसे क्विक और स्नैपी बनाता है। दूसरा इंप्रूवमेंट ये है कि इंटरनल स्क्रीन में कैमरा के लिए कॉर्नर कटआउट नहीं है। इसमें अब सैमसंग का इन्फिनिटी ओ ट्रीटमेंट है और हमें लगता है कि ये डिस्प्ले को बेहतर बनाएगा। फर्स्ट जनरेशन फोल्ड की ही तरह ये भी भारी भरकम है। इसका वजन 282 ग्राम्स है। सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 2 में है 45 mAh बैटरी। फोन के साथ आपको मिलेगा 25 वॉट्स फास्ट चार्जर। ये 11 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस बार सैमसंग ने हिंज में भी काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। अब आप इसका इस्तेमाल छोटे लैपटॉप की तरह भी कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 में 5 कैमरे हैं। इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर। इसके साथ 10 मेगापिक्सल के 2 अलग-अलग सेल्फी कैमरे भी हैं, एक आउटर कवर स्क्रीन पर और दूसरा इनर स्क्रीन के राइट साइड में। ये फोन अच्छी फोटोज क्लिक करता है, लेकिन इस फोन का मुख्य आकर्षण कैमरा नहीं है। फोल्डेबल स्क्रीन के साथ कैमरा एक्सपीरियंस भी अच्छा है। स्क्रीन के टॉप हाफ में व्यू फाइंडर मिलेगा और दूसरे हाफ में कंट्रोल्स और प्रीव्यूज।
सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 को ताकत देता है स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिपसेट। इसमें आपको 12 GB रैम मिलेगी। हमने इसकी इंटरनल स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग ट्राई किया और परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। जो भी टास्क परफॉर्म किया उसमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। ये 2 स्टोरेज वेरिएंट में आता है, 256 GB और 512 GB। हालांकि एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए कोई स्लॉट नहीं है। ये फोन Android 10 पर चलता है और इसके टॉप में है One UI स्किन। और अब सेल गुरु का फैसला। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 के साथ हमने भले ही ज्यादा समय ना बिताया हो, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में हमें काफी मजा आया है। हम कहेंगे कि आप अगर इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे खरीदें और फोल्डेबल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर वेरी स्पेशल सेगमेंट फॉर द एक्सपीरियंसेस यू डिजर्व, ब्रॉट टू यू बाय क्वालकॉम। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आज हम कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वी आर ऑल डूइंग। आई डोंट केयर आप कौन हैं, आई नो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। क्या है? एंड दैट इज गेमिंग। कुछ ही साल पहले जब पीसीज और कंसोल में सिर्फ गेमिंग होती थी, इतने कम लोग थे इन इंडिया दैट वी कुड एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ गेमर्स, एंड टुडे वी आर इन मिलियंस। ये चेंज कैसे आया? हाउ डिड इट चेंज? इतने हाई एंड ग्राफिक्स कैसे आपके फोन पे आ गए? ये सब कुछ हुआ है विद स्नैपड्रैगन एंड द क्वालकॉम एक्सपीरियंस। सो लेट्स नाउ सी हाउ इट एक्चुअली हैपेंड। आपको याद है वो वक्त जब हर एक जो है अपने नोकिया फोन पे एक ही गेम खेलता था, स्नेक? क्या बिग डील थी उस टाइम पे। मुझे तो सोच के भी बहुत अच्छा लग रहा है हाउ वी ऑल कम्पीटेड टू गेट द हाई स्कोर। कैसे हम लोग सोचते थे कि कमाल के ग्राफिक्स हैं ये, हाउ इज इट हैपनिंग ऑन अ फोन। उसको कंपेयर करिए आज की दुनिया से। वी हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। अब आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गेम्स फ्रॉम ऐप स्टोर्स, प्लस आजकल तो फोन्स आ गए हैं दैट आर स्पेशली डिजाइंड फॉर एन एक्सीलेंट गेमिंग एक्सपीरियंस। उनके नाम है स्पेशली बिल्ट फॉर गेमिंग फोन्स। इंडिया में मोर देन 90% ऑफ द गेमर्स जो है वो मोबाइल पे ही खेलते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप और कंसोल गेमिंग जो है बहुत ही लिमिटेड है ड्यू टू हाई प्राइसेस और बहुत ही लो पेनिट्रेशन है ऑफ सच डिवाइसेस। ज़्यादातर जो मोबाइल गेम्स होती हैं दे आर वेरी चीप टू बाय या इनफैक्ट फ्री होती हैं, एंड दे वर्क परफेक्टली इवन ऑन अ बजट स्मार्टफोन। अकॉर्डिंग टू मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन जो रेवेन्यू आती है मोबाइल गेमिंग से इंडिया में, इट विल बी वर्थ $943 मिलियन बाय 2022। एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 200% ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years, क्योंकि ये $466 मिलियन थी 2016 में। नॉट ओनली दिस, द नंबर ऑफ मोबाइल गेमर्स, जितने लोग मोबाइल गेम खेलते हैं इन इंडिया, that is supposed to reach 368 million by 2022, up from 269 million in 2019. तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि मोबाइल गेमिंग इज हैविंग इट्स टाइम अंडर द सन, एंड हमारे जो लाइक्स ऑफ स्नेक्स एंड सॉलिटेयर यही खेलते थे हम लोग, और नाउ वी हैव एडवांस्ड हेवी ड्यूटी गेम्स लाइक फ्री फायर, कॉल फॉर ड्यूटी, फोर्टनाइट एंड सो मेनी मोर। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है बाय द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन गैजेट जो हम सबके हाथ में है, आपका स्मार्टफोन। क्वालिटी ऑफ ग्राफिक एंड फोन प्रोसेसिंग स्पीड्स इंप्रूव हो रही हैं दिन बाय दिन। तो क्वालिटी गैप बिटवीन मोबाइल गेमिंग और पीसी और कंसोल गेमिंग भी लार्जली हटा दी गई हैं, एंड दैट इज हाउ गुड मोबाइल गेमिंग हैज बिकम। अब पैंडेमिक आने से एक चीज जरूर हुई, इट फर्दर एक्सेलरेटेड गेमिंग नंबर्स इन रीसेंट टाइम्स। लॉकडाउन सिचुएशन में पीपल वर फोर्स्ड टू स्टे इनडोर्स एंड दे हैड टू फाइंड वेज ताकि वो ऑक्यूपाइड रहें, एंटरटेन रहें। कई लोग खेल रहे थे हाई एनर्जी गेम्स, they let players compete with their friends and they created squads. Then there were games like Ludo, Tombola, Uno, Scrabble that actually contributed towards हमारा family time बना and friends and us came together. While the mobile gaming industry is very fast taking over the gaming ecosystem in India, typical pain points अभी भी हैं that users go through जब वो games खेल रहे होते हैं on their phone. For example, sluggishness, frequent hanging of the phone, inability to handle high-end graphics, overheating जो बहुत common है, battery drain जो बहुत common है, and many other such problems. In this episode, हम लोग देखेंगे what makes for a great gaming experience और जो processor है वो कितना critical है to providing this great gaming experience for us.
हम लोग बात करेंगे आज अबाउट द स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एंड हाउ उसने ट्रांसफॉर्म किया है आपके मोबाइल डिवाइस को इनटू एन एक्चुअल गेमिंग मशीन। जो अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स आते हैं, लाइटनिंग स्पीड्स हैं, ब्लेजिंग फास्ट रिस्पॉन्स है, इनक्रेडिबल ऑडियो है, ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कैसे करता है ये सब जादू। हम लोग को ज्वाइन करेंगे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, वो बताएंगे हमारे को कि प्रोसेसर ने कैसे रीडिफाइन किया है ये फुली इमर्सिव एलिवेटेड एक्सपीरियंस फॉर द स्मूदेस्ट गेम प्ले पॉसिबल। So I'm joined by Francisco Cheng, Director Product Marketing, Qualcomm. Great to have you on the show, and I'm going to start off straight away with a diving in. How have you seen mobile gaming change over the years? Thanks, Rajiv. Great question. We've been in the mobile gaming industry for a long time. We've seen casual games go to AAA and seen 100 million active users a month per game. We've seen visual complexity and visual quality go 1,000-fold in the last 20 years. There are more gamers on the mobile platform than any other platform combined. So with all this growth in mobile gaming, what does it mean to Qualcomm? Our core mobile technologies are in over 1 billion smartphones today, Rajiv. If you look at when we created our Snapdragon mobile platform, it also housed a GPU, our first mobile GPU, which stands for Graphics Processing Unit. This GPU is being taken advantage of by over 1 billion games today. Can you explain to our viewers what constitutes a great gaming experience? We hear about this all the time. What should they look for while choosing a gaming phone? The first thing that people should look for when they're buying a gaming smartphone is, of course, make sure that it has Snapdragon inside. Because with Snapdragon, you're guaranteed to get the smoothest gaming experience. And this is defined by the number of frames that the phone or the processor supports, which is up to 144 frames per second. This is world leading. We are the first to deliver this. The other thing that you should also come to expect from Snapdragon is that it delivers sustained performance, which means that you can game for long periods of time without losing any of that performance. A couple of other things that you should also be aware of is that Snapdragon delivers great visual quality. It delivers desktop level features. And of course, we have a world-class modem. That's very interesting, but how do you achieve this? We've been working with game publishers and phone manufacturers for well over 20 years. And how we achieve this is that we work closely with them to optimize our phones for things like the highest frame rates. The other thing that we also look to optimize in a game is to ensure that it has desktop level features, the highest HDR qualities. This involves careful planning with our partners to ensure that these games come to life with our Snapdragon mobile platform. Now this I think is an important question because a lot of people actually take their buying decision based on whether a phone has a Snapdragon processor or not. Anything unique that Snapdragon enables for gaming? Rajiv, there are a lot of unique features in Snapdragon gaming platforms. I'll talk about 3 of them. The first one is called 90 frames and 144 frames. So this allows games to hit that ultra smoothness that gamers want. The other thing that we've launched recently this year is something called GPU updatable drivers. This allows users to frequently update their graphics drivers so they're getting the latest features and performance from their gaming smartphone. The last unique feature that I'll talk about is Game Color Plus. For those who don't have HDR in their gaming phones, you can get this feature to increase the visual fidelity as well as the sharpness of games on your smartphones. Thank you, Francisco. Thank you so much for joining us and actually educating us about so many interesting things that we didn't know. Now let's move on and talk to the General Manager at POCO India, C. Manmohan. Thank you so much for joining us and many congratulations on the new edition, POCO X3. Tell us a little bit about this phone. Thank you so much, Rajiv, for having me here. We are indeed extremely excited to be launching POCO X3. It's a successor to POCO X2, which is actually considered a very good gaming phone out there. In fact, POCO X3 is the first phone in the world to be powered by Qualcomm Snapdragon 732G. It actually comes with the Adreno 618 GPU,
So extremely excited to be launching this device. You know, I think the most important thing I want to know, because that's what we are basing our show on today, what role is played by the processor in enabling such an experience? Yeah, to answer your question, yes, the processor forms the key and the most critical component of any smartphone. POCO X3 comes with the Snapdragon 732G chipset, where the CPU is clocked at 2.3 GHz. This, along with other features like the 6000 mAh battery and the liquid cool technology, makes gaming and high performance tasks very easy. Along with this, in fact, there are many other software features also that we have included in POCO X3, like the game turbo mode, which makes gaming extremely awesome. So tell me, you chose the Snapdragon 732G processor for your phone. Why did you choose this particular processor? This is pretty simple. If you look at the history of POCO F1, POCO X2 and POCO M2 Pro all were powered by Qualcomm chipsets. So it was very obvious for us also to take a look at Qualcomm and take the best out of it. And Qualcomm Snapdragon 732G chipset pretty much takes every important thing there. Let it be thermal efficiency, let it be the power, let it be the processing speed, let it be the GPU, everything, right? So it was obvious for us, and to be honest, we are extremely excited to be the first in the world to be launching this chipset. How is this phone different from other gaming phones in this price segment? What other features do you have on your phone to make it a great gaming experience for the consumer? To begin with, first of all, we have the latest 4G chipset from Qualcomm, which is Qualcomm Snapdragon 732G, which differentiates POCO X3 from the rest. That's number one. Apart from that, we have various other features like the liquid cool technology, the massive 6000 mAh battery, and lastly, the 120Hz refresh rate, which makes the performance extremely smooth and efficient. Thank you so much for joining us. Wonderful having you on the show, and I really hope you come back again because it's been very, very educative. ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, और अगले हफ्ते बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ नया है, इंक्लूडिंग द पोको X3. मेन क्वेश्चन ये है, एट 17,000 रुपीज अगर आप स्पेक्स ऑन पेपर देखें, देयर इज नो फोन लाइक इट. लेकिन पोको है, शाओमी है, इसका मतलब एड्स एंड मोर एड्स होगा कि नो एड्स होगा. दैट इज व्हेन वी विल एक्चुअली बी एबल टू टेल यू कि अच्छा फोन है कि बकवास फोन है. ऑल हैपनिंग नेक्स्ट वीक.